So today I will discuss with you Derek Walcott and especially his poem A Far Cry from Africa. Already I told you that Derek Walcott is a poet of New English literature, New literature in English. Second important point you have to remember that his poem A Far Cry from Africa just talks about the same problem, the same issue which we have already discussed earlier in the poem Australia written by A.D. Howe. Colonizer, colonized, the devastation of culture, these things. So you see here Derek Walcott, a poet and dramatist. A poet and dramatist was born in 1930 in Saint Lucia. This is a very significant point. Derek Walcott, he was a poet and dramatist and was born in 1930 in Saint Lucia. He belonged to both Africa and European roots. He identifies himself as mongrel. He identifies himself as mongrel. This mixed heritage makes him able to identify the post-colonial situation. It's a point. The post-colonial situation more effectively and successfully. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1992. तो हम लोगों को जो कॉमन पॉइंट है उनका जन्म 1930 में हुआ है। उनको जो है क्या मिला हुआ था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। कब मिला हुआ था? 1922 में मिला था। डेरिक वालकोट क्या है? एक पोएट है और ड्रामेटिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो आपको लेकर के मुझे बात करती है, जिसे लेकर के मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट that is a far cry from Africa. You see here the poem A Far Cry from Africa. The poet ironically describes how he rejects the British culture. This is a significant point. The poet rejects the British culture and the colonial ideology. This point you have to keep in your mind. If anyone asks you who has written A Far Cry from Africa, A Far Cry from Africa is a poem written by Derek Walcott. And in this poem, what the poet does, the poet rejects what? The poet rejects the British culture and the colonial ideology. If any poet rejects the British culture and colonial ideology, it means that he is a post-colonial poet. In post-colonialism, you find the rejection of colonial ideology and the rejection of the colonial culture or the culture of the colonizer, culture of the colonizer. So ब्रिटिश कल्चर को रिजेक्ट किया गया, colonial ideology को रिजेक्ट किया जा रहा है इस पोयम में। इसका मतलब कि he is a post colonial poem. Second important point, when I talk about analysis, you come to know the poem A Far Cry from Africa belongs to a post colonial poetry. Mainly the theme discusses the events of the Mau Mau. This thing has been asked. It was a you can say a revolt or uprising, a revolt. And what was that revolt? That revolt was the Mau Mau revolt. Mau. This revolt took place. Yeah, this revolt uprised in Kenya in the early 1950s. A revolt took place. That revolt was a Mau Mau revolt. It came, it took place, it broken out in Kenya in the early 1950s. It was a bloody battle during the 1950s between European settlers and the native Kikuyu tribes in Kenya. What tribes? Kikuyu tribes in Kenya. So Mau Mau, remember that. The Mau Mau, it was what? It was an uprising, and this uprising took place in early 1950s. And in this uprising, we find a bloody battle, we find clash between the European settlers. European settlers means colonizers,
and the native Kikuyu tribe. The native Kikuyu tribe means colonized people, मूल निवासी, born people of Kenya. उनके बीच में एक क्या होता है, ब्लडी बैटल होता है. तो हमें क्या ध्यान में रखना है, माऊ माऊ अपराइजिंग को, किकियू ट्राइब को, और जो ब्लडी बैटल टुक प्लेस लिया हुआ. Kikuyu was the largest and most educated tribe in Kenya as the British people invaded more their land. They outrageously reacted. They reacted. So reaction is there. Reaction was there. So what happened then? Their land was snatched. Their land was occupied. Their land was occupied by whom? Their land was occupied by the colonizer, or यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन, और ब्रिटिशर. जब उनके लैंड को उन्होंने क्या किया, एक तरह से छीन लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक तरह का अपना रिएक्शन दिखाया, उन्होंने अपना विरोध जताया. द केनियन ट्राइब्स रीबेल्ड, जो केनियन ट्राइब्स था, रीबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश हु स्टोल द मदरलैंड. Stealing the motherland is a crime, and always see that the motherland is stolen by whom? The motherland is stolen by, yeah, the motherland is stolen by whom? It's stolen by the colonizer, one who does not belong to that land. They are the invader, they are the attacker, they belong to any other country, they come, attack, win that land, and steal it also. That is the point. So when the motherland was stolen, Kikuyu tribe got angry and they revolted. The rebellion was under a secret organization called Mau Mau. And what was Mau Mau? Mau Mau was an organization under the supervision, under the leadership of this organization. The revolt took place. The rebellion, जो विद्रोही थे, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम चलाया under the secret organization called Mau Mau. It is estimated a large number of Kikuyu as well as whites were slaughtered during the process. Many Mau Mau and many, you can say, many Kikuyu and many white people were killed, executed, given death sentence. ठीक है. The poem starts with the painful, jarring, harsh experience of the rebellion that changed the tranquil, peaceful setting of the country. The poem starts with the painful, jarring, harsh experiences of the rebellion that changed the tranquil, peaceful setting of the country. जो कंट्री था, जो कि एक ट्रैंकिल और पीसफुल जहाँ पे सेटिंग था, उस सेटिंग के वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. नेचुरल सी बात है, इफ देयर इज एनी वॉर बिटवीन टू पार्टीज और टू नेशंस, तो ट्रैंक्विलिटी विल go far away. Tranquility will go far away. There will be no tranquility, no calm, no balm, no peace at all. The nation itself compared to an animal. It's a very important question. The Kenya जो है, जो nation है, उसकी तुलना किससे की गई? Animal से की गई है. As it indicates, it is an animal like a lion. और उसका तुलना किससे की जाती है? Lion से की जाती है. It is an animal like a lion. Kikiyu started the bloody battle, and in the poem it has been also told how Kikiyu, that's a tribe, one of the most populated tribe of Kenya, how they started that battle. The Kikuyu are compared to flies. Second important point. नेशन का तुलना एनिमल से. वहां पे रहने वाली जो ट्राइब है, जो किकियू, वहां की जो रहने वाली ट्राइब है, उसकी तुलना किससे? फ्लाइज से. who are feeding on blood, जो खून के प्यासे हैं. Next we are informed the aftermath of the rebellion. The poet described that the country before the conflict was paradise. पोएट का ये कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो कंट्री था वह कैसा था? पैराडाइज था. वह वर्ड्सवर्थियन एक तरह से नेचुरल वर्ल्ड था, जहाँ पे पीस था, काम था, ट्रैंक्विलिटी थी, बाम था,
फाउंटेन हेड ऑफ, आप कह सकते हैं कि पीस का बाम एंड ट्रैंक्विलिटी था। ये जो है कौन कहता है कि द पोएट सेज कि जो नेशन है इस बैटल से पहले वह क्या था, वह एक पैराडाइज था। एंड विद एन आयरॉनिकल कमेंट ही इंडिकेट्स द डेथ, inhumanity, and destruction occurred in the land. The poet tells about death, inhumanity, and destruction. This death, this destruction, this inhumanity occurred, took place in the land because of the you can say a wrong system, the system that was established by the colonizer, attacker, colonizer, outsider, colonizer, invader. The European imperialist nation, especially the white people or the English people, they colonized whom? They colonized African. And in Africa, especially Kenya, and in Kenya, a particular tribe, Kikuyu tribe. When Kikuyu tribe was what made slave, not only they made slave physically, they were made slave mentally, they were made slave spiritually, economically, politically, their culture, their art, their civilization, all the things were destroyed, eradicated. And what happened that they were made slave and inferiority complex took place. They were dissatisfied. They didn't get peace, calm, and tranquility in that system. So they revolted. And they revolted under an organization. The name of the organization was Mau Mau. And in the poem, you come to know what you come to know. The two pictures have been presented. पूरी poem में दो तस्वीर पेश की गई है। एक तो रिवोल्ट से पहले की तस्वीर और एक रिवोल्ट के बाद की तस्वीर। रिवोल्ट से पहले की तस्वीर में क्या है, द नेशन वाज लाइक अ पैराडाइज। लेकिन जब रिवोल्ट होता है तो नेशन की तुलना किससे की जाती है, एनिमल से, लाइक अ लायन। और वहां के रहने वाले जो लोग हैं, किकियू लोग, उनकी तुलना फ्लाई से की जाती है, जो कि खून की प्यासे हैं। सो दिस थिंग्स वी सी, एक कंपैरिजन आप देख सकते हैं। And the poet also describes what he indicates in ironical way the experiences of death, inhumanity, and destruction occurred in the land. There is the juxtaposition of the conflict against something divine with the images of corpses scattered through a paradise. And he says that it seems that the corpses scattered through a paradise, कि ऐसा लगता है कि पूरे पैराडाइज में केवल डेड बॉडी ही बिखरी पड़ी हुई है। The worms that can be seen as the ultimate emblem of stagnation and decay cries at the worthless death. The worms, WORMS, that can be seen as the ultimate emblem of stagnation and decay. Stagnation and decay all over the side. There is only stagnation, decay, death, inhumanity, injustice, inequality, blood, means all these things we see. So what does he say? He says that stagnation and decay cries at the worthless death. This death is worthless. Sarcastically, poet indicates how the humans are reduced to statistics, and at the same time, though scholars justify the presence of white men in Africa. ये बहुत important लाइन है। इतना सब खून खराबा होने के बावजूद, इतना सब जो है अत्याचार होने के बावजूद और एक रॉन्ग सिस्टम डेवलप करने के बावजूद भी कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, वे कहते हैं, and at the same time, though scholars justify the presence of white men in Africa, many scholars, even many scholars of Kenya, many scholars of Europe, they justify the presence of white men in Africa. Who are the white men? White men means colonizer. White men means English people. White men means people of European imperialist nation. And they show their presence. They are where? They are in Africa, in Kenya, as colonizer, as you can say Eurocentric, as superior superior per- superior person.
So their presence was justified by some scholars. वो कहते हैं इतना अत्याचार इतना होने के बावजूद भी, and the process of civilizing the natives, और उनको ये कहा जाता है कि उन लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों को सभ्य बनाया. The poet indicates the fact that it was a failure with the brutal death of the small white child and his family. It's a very important point. The people justify the presence of the white people. Why the people justify the presence of the white people? Because they say and they give argument that white people made civilize the black people. Black people, the native people, Kikiyu, they were uncultured, they were unsophisticated, they don't have any manner, they don't have any culture, they don't have any civilization. They were made civilized by the white people, therefore their presence means everything, and it has been justified. So you see there, what you see there, scholar justifies the presence of white men in Africa and the process of civilizing the natives. The poet indicates the fact that it was a failure with the brutal death of the small white child and his family. People behave like animals, savages hymns, and reminds us the persecution endured by the Jews. People behave like animals, savages, uncultured. Hints and remind us the persecution endured by the Jews. और वो याद करते हैं कि कैसे जो है Jews को persecute किया गया था. Remind us the persecution endured by the Jews in Second World War. Do you remember especially Hitler, उनका जो है आप कह सकते हैं कि जो कैंप वगैरह था, गैस चैम्बर, these things. तो ज्यूस को कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पनिश किया गया था, परसिक्यूट किया गया था. Jews were killed in millions due to their ethnicity during the time of Hitler. वही बात उन्होंने कहा. Though the time and place is different, इस समय टाइम और प्लेस अलग अलग है, लेकिन सिस्टम वही है. लोगों के किलिंग करने का, लोगों के को मारने के पीछे का जो रीजन है वो क्या, एथनिसिटी, उनका इथनोग्राफी. Though the time and the place is different, the same kind of situation repeat in the world time to time. Next, the poet creates a picture of white men in searching for native who are hiding behind the bushes. इसके बाद पोएट क्या करता है, पोएट प्रेजेंट्स द पिक्चर एंड व्हाट पिक्चर द पोएट प्रेजेंट्स, द पोएट प्रेजेंट्स द पिक्चर दैट व्हाइट पीपल आर सर्चिंग, whom white people are searching, the black people. The black people are Kikiyu, the born people of England who got shelter, yeah, who are hidden behind the bush, yeah, bushes. तो एक सिचुएशन ये भी क्रिएट हो गई कि झाड़ियों के पीछे लोग छिपे हैं जान बचाने के लिए. Further he tells, what he tells that, repeating the word, yeah. Next poet creates a picture of white men in searching for the native who are hiding behind the bushes. The sound of Ibiza's hints a bad woman. जो साउंड ऑफ इबिजेस है, एक इसका प्रतीक है बैड ओमन का, अपशकुन का. Again, the repetition is shown through the word wield. The civilized even thrived on conquering others. Thus, this process of violence and conquering each other indicates the law of jungle. It's a very important phrase, the law of jungle. एक दूसरे पर जब जीतते हैं तो थ्राइव करते हैं, और यह इंडिकेट करता है कि देयर इज नो लॉ, देयर इज नो, आप कह सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस, एनीथिंग. और ये चीज क्या है, बल्कि वहां पर क्या है, द लॉ ऑफ जंगल देयर रिमेन्स. The violence of beast and beast is it's a phrase. The violence of colonizer on colonized. The violence of colonizer, चूंकि दोनों इस समय बीस्ट हो चुके हैं, किकीयू वाले भी वायलेंस कर रहे हैं जहां मौका मिल रहा है, और जो व्हाइट पीपल है वो भी, तो दोनों जो है तो यहाँ पे बीस्ट एंड बीस्ट रिफर्स टू व्हाट, बीस्ट एंड बीस्ट रिफर्स टू द वायलेंस ऑफ colonizer on colonized, and justify according to the law of nature.
द लॉ ऑफ जंगल। जो लॉ ऑफ नेचर है, जो लॉ ऑफ जंगल है, केवल इसी आधार पे इनके कामों को जस्टिफाई किया जा सकता है। जंगल में कोई ना नहीं है, जो जितना शक्तिशाली है वो उतना ही कमजोर पे वार करता है। जंगल का नेचुरल लॉ यही है। Yet it cannot be applied to the upright men who are stretching out themselves to reach the divinity. Apart from the task of stretching themselves to reach divinity, they end up with inflicting pain, which is killing, and which is the law of jungle, killing for prey. कह रहे हैं कि ये जो नियम है, यह चीज नहीं पहुंच पा सकता कहाँ पे, उन लोगों को जो किसमें डिविनिटी में बिलीव करते हैं। yet it cannot be applied to the upright men who are stretching out themselves to reach the divinity. There are some people who believes in God. There are some people who believes in divinity. This can't be applied to these people. लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, इसके बावजूद भी there are some pain, inflicting pain. The people are killing each other. There is only the law of jungle. People are praying. This pray means शिकार करना. PREY. People are praying each other. The people don't treat anyone as human. They treat each other as enemy, and there is a hostility. There you can say ki enmity, hostility or enmity between the colonizer and the colonized. The revolt took place under the organization that is Mau Mau, and who is the revolter? Kikiyu. And who is the Kikiyu? Kikuyu is the born people of Kenya, one of the most populated tribes of Kenya. उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दे कॉल फॉर द मासेकर, दे कॉल फॉर द मासेकर। मासेकर का मतलब होता है नरसंहार, लंबे पैमाने पर हत्या किया जाना। दे क्रिएट बाय किलिंग एज वॉर एंड दे डू इट, दे कमिट इट एज जस्ट किलिंग so many people in war. Ironically, wars between people are described as following the beat of a drum, an instrument made of an animal hide stretched over a cylinder. Though the natives think the act of killing white men brings them courage, it ends up with fear. Another important point. जो नेटिव पीपल है वे सोचते हैं कि जब वे व्हाइट को मारते हैं तो उनके अंदर साहस आता है और इससे उनका फियर खत्म हो जाता है। दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज दैट कि द नेटिव थिंक the act of killing white men brings them courage. It ends up with fear. Moreover, the poet emphasizes the fact that though the native justifies their task, mentioning it as brutish necessity. What they justify, moreover, the poet emphasizes the fact that though the native justify, जो बॉर्न पीपल है वे अपनी हिंसा को जायज ठहराते हैं और ये कहते हैं कि इसकी जरूरत है, ब्रूटिस नेसेसिटी, एंड कंसिडरिंग इट एज अ नेशनल काज, और वे कहते हैं वे ये सारा काम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे जस्ट क्लीन देयर हैंड्स विद द नैपकिन ऑफ डर्टी काज, और वे अपने जो है गंदे हाथों को, देयर हैंड्स में अपने हाथों को साफ करते हैं नैपकिन से और गंदी चीजों के लिए, फूड, ब्लड, टेरिफाइंग सिचुएशन, हॉरिफाइंग सिचुएशन, किलिंग ऑफ द colonizers, these things. So the poet suggests the fact that the native cause is dirty. देखिए पोएट का एक चीज ये कहना है कि नेटिव के लोग जो है वो भी डर्टी है, क्योंकि हिंसा वे कर रहे हैं और उस हिंसा के नाम पर वे कहते हैं वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। दिस इज दे से। So this is a very important point. So the poet suggests the fact that the natives cause is dirty and ugly, though they consider it as right and nationwide. जो लोग कर रहे हैं कि वे समझते हैं वे सही कर रहे हैं, वे राष्ट्र के लिए कर रहे हैं और वे अपने आंदोलन को पूरे राष्ट्र में फैलाएंगे। लेकिन पोएट की नजर में जो हिंसा है, दैट्स नॉट द गुड थिंग, क्योंकि पीपल आर नॉट अ राइट डायरेक्शन। He sees a comparison with the West Indians who had their share of harsh experiences with spit. With spit. He sees a comparison with the West Indians. वो अपनी तुलना वेस्ट इंडियंस से करते हैं
who had their share of harsh experiences with Spain, जहाँ पे स्पेन ने कब्जा जमाया था, वेस्ट इंडीज ने, कैरेबियन आइलैंड ने कैसे लड़ा। द फाइट इज जस्ट एज द गोरिल्ला रेसल विद सुपरमैन। यानी ये जो फाइट है ये ऐसी ही है जैसे कि कोई गोरिल्ला रेसल हो किसी सुपरमैन से। फाइट में का तुलना सुपरमैन से हो रहा है और जो है अपनी तुलना में ब्लैक पीपल गोरिल्ला से कर रहे हैं। द गोरिल्ला इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज कंपेयर टू नेटिव। जो गोरिल्ला है वे बॉर्न पीपल है, नेटिव है। एंड सुपरमैन इज कंपेयर टू व्हाइट मैन। सुपरमैन की तुलना व्हाइट मैन से है। The last two lines indicate the situation of the poet as he belongs to both culture, as he belongs to both culture, how he feels inferiority. कल्चर को लेकर के उसको कैसे इंफीरियरिटी का एहसास होता है। कारण है कि कोलोनाइजर ने हमेशा यही पढ़ाया कि यू डोंट हैव कल्चर, यू डोंट हैव सिविलाइजेशन, यू डोंट हैव एनी आर्ट, यू डोंट हैव एनी हिस्ट्री। तो पोएट को लगता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कल्चर को लेकर के रिगार्डिंग द सिचुएशन। द मिक्स्ड हेरिटेज ऑफ द पोएट मेक्स हिम अनेबल टू डिसाइड विच ही शुड बी पार्शियल। यानी जो उसका मिक्स्ड हेरिटेज है कि वो अफ्रीका से बिलोंग करता है, अफ्रीका के अलावा यूरोप से भी बिलोंग करता है, तो कभी कभी उसको लगता है कहीं वह किसी का पक्ष तो नहीं ले रहा है, कहीं वह पार्शियल तो नहीं हो रहा है कि अफ्रीका की बुराई कर रहा हो, केन्या के लोगों की बुराई कर रहा हो, ब्रिटिशर के सपोर्ट में तो खड़ा हो रहा हो। ये भी एक उसके साथ डायलेमा है। द टाइटल इटसेल्फ टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ माइंड। जो टाइटल है पोयम को वह भी इंडिकेट करता है उसके स्टेट ऑफ माइंड को, खास करके पोयम के दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अ क्राई फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, कि उसको अफ्रीका की याद आती है। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, करे करे कि उसको अफ्रीका की याद आती है जब वह यूरोप में रहता है, जब अफ्रीका में रहता है तो उसको यूरोप की याद आती है। उसको दोनों जगहों से प्यार है, क्योंकि जो पोस्ट कॉलोनियल इरा है, कोई भी कल्चर प्योर कल्चर नहीं, सारी कल्चर हाइब्रिड है और सारी कल्चर मिक्सड अप है। तो नो कल्चर कैन बी कि इट्स द कल्चर ऑफ किकियू ट्राइब, इट्स द कल्चर ऑफ कोलोनाइजर, इट्स द कल्चर ऑफ कोलोनाइज्ड, बिकॉज इन पोस्ट कॉलोनियल इरा देयर इज अ हाइब्रिडिटी। इसीलिए वो कहता है कि मैं जब भी दूर रहता हूँ तो मुझे यूरोप की भी याद आती है, मुझे जो है क्या है, मुझे अफ्रीका की भी, क्योंकि एक ऐसा राइटर जो मिक्स्ड कल्चर में पला बढ़ा है। A cry from great distance away, and moreover it shows the alienation, और पोएट को अकेलापन का एहसास होता है, इंफीरियरिटी का ऑफ द पोएट। द पोएम एंड्स विद अ पिक्चर ऑफ वायलेंस। पोएम का जो समापन है, खात्मा है, उस अंत में भी वायलेंस दिखाया गया, क्रुएल्टी दिखाई गई है। एंड विद द आइडिया ऑफ सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी, और एक विचार लगातार चलता है कि पोएट की कौन सी आइडेंटिटी है, कि यू आइडेंटिटी, अफ्रीकन आइडेंटिटी, या आप कह सकते हैं यूरोपियन आइडेंटिटी, और मिक्स्ड आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी जो हाइब्रिडिटी पर आधारित है। सो ये चीजें रही है जो 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 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रहा है। और मैंने बताया था कि मैं एक ही टॉपिक को लूंगा, whether I finish it within 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, or 1.5 hours, that doesn't matter. But in a day, I will discuss only one topic, and today I have done what I have done, a far cry from Africa. Walter, the poet, you here see what you see here, Derek Walcott poet है। इन लोगों को हमने डिस्कस किया है, and I hope that you have enjoyed it. We will meet again, and for tomorrow, I will take your class tomorrow. Be ready for tomorrow. Okay, okay. Thanks to all of you. Thank you, sir. Good night.